Good evening, everyone. Am I audible? So, dear friends, today we are going to discuss, today we are going to start the discussion of five elements. Very, very important thing. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है five elements. So, I will start from Budu. I will start from Budu. Bud means liver and gallbladder. So we'll understand the each and everything connected with the Bud. हम बुड से संबंधित सारी बातें समझेंगे. We will be understanding all the things connected with the liver and gallbladder. Then after that, not only this, itna hi nahi, we will continue the discussion of liver and gallbladder. हम इसी का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हुए then what we'll do, we are going to discuss some conditions like laws of the liver. लिवर के भी अपने कुछ नियम होते हैं, the laws of the liver. Okay. And the various condition like the liver stagnation, liver heat, jaundice, and will complete the liver in the very detail. हम लिवर को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. Is this okay? Or another option is first we understand wood, fire, earth, metal, water. We'll finish this discussion, then we'll go in the deeper detail of liver. What do you want? Option A or option B? Option B. Option A. Option A means एक ही जगह लिवर 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 गॉलब्लैडर लिवर गॉलब्लैडर लिवर गॉलब्लैडर जब तक इसको खत्म ना कर दिया. Option B will discuss all the five elements: wood, fire, earth, metal, water. Then after that we will start detail of wood, then detail of fire, then detail of earth. So write your choice, option A or option B. ज्योतिका जी आपके साथ कोई नहीं है. ऑल आर विद ऑप्शन ए. बी. हाँ चलो, दो तीन लोग हैं. एक्चुअली जो नए लोग हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा ये है कि पहले पूरा फाइव एलिमेंट समझ लिया जाए, फिर एक एक की डिटेल में जाया जाए, है ना. तो चलो देखते हैं, जैसा मूड बनेगा वैसा करेंगे, है ना. लेट्स गो विद द फ्लो. आप सबके पास लिवर है राइट नाउ. यू हैव लिवर. डू यू हैव लिवर? हम्म. तो पहले हम पता करते हैं कि आपके पास लिवर है कि नहीं. द मीनिंग ऑफ लिवर मीन्स गुरु द्रोणाचार्य. आर डू यू हैव? एवरीवन इज हैविंग गुरु द्रोणाचार्य इन यू. हम सबके अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, हमारे अंदर हैं. डू यू हैव दैट? हाउ टू फाइंड आउट? We will see. I will discuss all the symptom. I will discuss all the sign. I will discuss all the thing. Then you find out whether you are having Guru Dronacharya in you or not. Because each and every meridian having connection with one planet. Liver is having connection with Jupiter or the Guru. Liver means memory chip. But we will be thinking, okay, brain is okay, brain, heart, all might be connected. Spleen might be connected to the memory. But liver is, when you will go in the deeper detail, you will understand
Liver is responsible for making you guru. Okay. If liver is overactive, you will become Mahaguru. Then everyone will run away from you. महागुरु महागुरु मतलब हर चीज में टोकना रोकना, वो गुरुओं का गुरु है, महागुरु हो गया. Guru means balance. And many people are not having guru. So they don't know what to do. They don't have vision. They don't know what to do. Okay, so let's start. But before that, let's start yin yang, because from the yin yang only liver and the wood element will be coming out. So now, do you have one coin with only one side? Do you have one coin? क्या आपके पास कोई ऐसा सिक्का है जिसकी केवल एक ही साइड हो? Not possible. In the same way, yin and yang are just complementary. If the pure yin and the pure yang, not, the life is not possible. The existence is not possible with the pure yin or the pure yang. So yin and yang are complementary. So let's try to understand here. My favorite example, I have repeated many times. Today I will repeat once again. So now, from 0, 0 means no activity. 0 means resting phase. Let's try to understand with the example of car. Your car in the garage. आपकी कार कहाँ खड़ी है? गैरेज में खड़ी है. Okay, so this is the from nothingness. Now you want to go your clinic. So you will start the car. You are starting the car. Then you are speeding the car. Okay. Then you are speeding to maximum. Okay. Then suppose you went somewhere and you are coming back to your home. आप कहीं गए और अपने घर में वापस आना है. Now you are on the highway, maybe on the highway. So you are going with the stable speed. With the stable speed. Maybe on the highway. Now, no need to increase the speed because you are already on the very high speed. Suppose you started the car, then your car started here. This is the ignition of engine. Ignition of engine. ये आपकी गाड़ी का इंजन आपने चालू किया. Then you are speeding the car 20, 40, 60, 80 km per hour. You are reaching on the maximum maybe 140 km per hour. Maybe more, maybe less.
Now no need to increase. Now you are maintaining the stable speed 140 kilometer per hour. Now you are reducing the speed because you want to come back. Now you are reducing the speed again from 140 to 100 to 80 to 60 to 40 to 20 kilometer per hour. You are reducing the speed. So for that you are putting the brake. इसके लिए आप ब्रेक लगा रहे हो थोड़ा 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 ब्रेक स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगा रहे हो you are putting strong brake more brake we can tell more brake now finally you are reaching back to garage so again stopping the car okay so in this way what we understood हमने क्या समझा हमने क्या समझा इसमें so when we took the car on the phase number 1 we took to the high speed हमने इसे बहुत हायर स्पीड तक ले गए so on the half part of this cycle what we did we are continuously growing speeding and the second half of cycle we are continuously decreasing right so when we are growing that is called yang means expansion yang means growth yang means expansion yang means growth yang means speeding up what is yang means expansion yang means growth yang means speeding up okay yang means going beyond yang का अर्थ है फैलना ग्रोथ करना स्पीड अप करना और दूर जाते जाना and the yin means break more break then the strong break then reducing the speed and coming back to our home ये है yin so this is the difference between yin and yang we can take another example एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं so before that I want to tell you in this cycle the half part is yang when we are growing and the half part is yin when we are decreasing reducing let's take another example so from the zygote means made with the fertilization of male and female पुरुष और स्त्री के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है now from the zygote there is a birth of one man or woman birth of one child so this is the starting of life okay starting of life then this child is growing reaching on the maximum growth
becoming a youth person, full youth. So we can see this is the continuous growth on this side. After that, फिर हमें पता है when we become youth, then for some time we are stable. Neither we are becoming more youth nor we are getting old. So there is some stable phase of the life. Then our aging starts. Aging. Okay, wrinkle start on the face and the body. We are becoming old, moving toward the old age. And finally, in the last cycle, death. Ending of life. तो हमने देखा इस साइकिल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. On the one side there is a growth, that is young. On the other side there is a degeneration. दूसरी साइड क्या है? Degeneration. That is yin. So yin and yang are always complementary cycles. yin और yang क्या होती है? There are two opposite and interconnected cycle. They are always connected with each other. So the meaning of yang is always remember, the meaning of yang is growth, maturation. The meaning of yang is growth, maturation. Moving toward the sky, moving toward the heaven. The fire, because the nature of fire is going upward, or the heat. On the other side, if we talk about the yin, अगर हम yin की बात करें, yin are just opposite. The meaning of yin is not the growth, but degeneration. We are doing the comparison, right? On the one side, there is a maturation. On the other side, there is a degeneration. One thing is going up, that is yang, and the things going down, moving down, that is yin. That is yin. On the fire, we can tell yang. On the other side, we can tell cold thing are yin. So this is a very small comparison, right? So yin yang is a very big subject. So that's why quickly I will tell you. अगर मैं आपको quickly बोलूं. So if we do the comparison, like yang is on the one side is yin. So when we are having yang, we are having continuously growth. That's why. In the childhood, if the kids are having good yang, they are having good height. They are having good growth and vertical growth if they are having good yang in the childhood. अगर बच्चे का यांग अच्छा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और बच्चों का यांग अच्छा होना चाहिए. On the other side, if we talk about if the kids are not dynamic, the kids are not having enough yang, maybe they are lazy, then we can see the chances to get less height. Height कम होने की संभावना हो सकती है. So remember few things. Yang means dynamism. Like we can compare, sun is the yang, heat is the yang. On the other side, yin means cooling thing, just opposite.
Like we can compare moon is the yin. अगर हम मून की बात करें तो वह yin होगा. Okay. If we see the body is very hot, we can tell more yang. वो बॉडी इज आइसी कोल्ड, बर्फ की तरह ठंडी है. हाथ बर्फ की तरह ठंडे, पैर बर्फ की तरह ठंडे हैं. इसका मतलब है कि यिन ज्यादा है. तो इन द टीसीएम व्हाट वी डू, वी आर फाइंडिंग आउट द पैटर्न, वी आर फाइंडिंग आउट द कंडीशंस एंड वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट. तो यिन यांग के बारे में हम और बात करेंगे आगे, लेकिन राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस द 5 एलिमेंट्स. सो नाउ लेट्स talk about the 5 elements in a different way. So I told you, so car in the garage, car in garage here. कार अभी खड़ी है, कार एट होम. ठीक है. नाउ फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टार्टिंग ऑफ कार. स्टेप नंबर 2, speeding the car. Because after the starting 20, 40, 80, 100, you are speeding the car kilometer per hour. And the third, reaching to maximum speed. These 3 phases are the yang phase. Step number 1, step number 2, and step number 3. These 3 are the yang phase. So we can tell yang 1, when something is starting, ignition or the birth. Step 2, when something is speeding up or growing. So growth or the speeding, that is the step number 2. And when the things reaching to the maximum, जब चीज अपने highest पर पहुंच जाती है, reaching to the maximum means maximum speed or the maximum growth. After that, no further growth is possible. That is the step number 3. Okay. So these 3 conditions, step number 1, step number 2, step number 3, are called yang phase. Okay. On the other side, 3 in the yin phase. When we are reaching to the maximum growth, when we are reaching to the maximum speed, suppose you are driving the car 20, you are speeding up 40 km per hour, then you are speeding up. आपने एक्सीलेटर दबाया 80 km per hour, 100 km per hour, and here you reach to the 140 km per hour. Now, if you want to bring stability, you will put the brake. Now you will put the brake. Why? To make your car stable on the same speed. So this brake is opposite force. ये ब्रेक क्या है? ये अपोजिट फोर्स है. पर्पज टू मेक द स्पीड 140 और कंट्रोल्ड स्पीड. Okay. So we have put the brake. So this is the yin phase, step number 1. We can tell step number 1 of brake. Yin means brake. Now we are putting stronger brake or reducing the speed, or in the other word we are telling degeneration. जब कोई चीज ग्रो हुई थी, now it's going toward the degeneration. So we can tell step number 2, brake, stronger brake. Now finally,
When you reaching at the home, that is step number 3. Now full brake. Your car stopped here. Now there is no further speed, zero speed. That is step number 3. So these 3 are the yin phases. So now to understand these phases very easily, इन्हें ही नाम दिया है 5 elements. The meaning of 5 element means when we are starting the car, when we are starting anything, when there is a birth of anything, that is called बुड. उसे कहते हैं बुड. The meaning of बुड means starting phase of anything, birth of anything. एक पौधे का जन्म हुआ बुड, एक बच्चे का जन्म हुआ बुड, एक गाड़ी को स्टार्ट किया बुड, इस पृथ्वी का जन्म हुआ, इस यूनिवर्स का जन्म हुआ बुड. So when we are talking about the first step, that is बुड. First step means wood. You want to go somewhere, you have taken first step out, that is wood. पहला कदम wood है. So remember one thing, if the person is having strong wood, will always initiate the thing. Wood means initiation. Wood means starting. Wood means birth. Wood means starting the car, starting your bike. आपने सोचा मुझे कहीं जाना है. You're thinking that you want to go somewhere. You're thinking, but maybe your friend started the bike. Okay, let's come. Means he is having more wood than you. उसके पास ज्यादा wood है. You're just thinking, oh, I have to meet my friend. He just lives 2 kilometers away from here. मुझे अपने friend से मिलना है. If you are having good wood and you are having time, you will start your bike and immediately you will go. Other you will keep thinking, okay, कौन जाए, कैसे जाए, कहाँ जाए. That's why wood is very important. If your wood is balanced, you always take first step. You always initiate the thing. You want to start your business? Without wood, you cannot start. Because if you want to start your business, for that you have to take first step. पहला कदम उठाना पड़ेगा. Okay. So you can see, if you want to become a good captain of the cricket team, football team, you should have good wood, because wood means it's providing you vision. Then only you can take first step. तभी आप पहला कदम उठा सकते हो. तो अभी हमें just now we have to understand only one thing. Wood means step number 1. Clear? Wood means first step. As per the TCM, liver and gallbladder coming under the wood element. So the first step, that is wood, and liver and gallbladder are coming under the wood. Liver means LIV and GB means gallbladder. Then the step number 2, that is after starting the car, now you are speeding the car, speeding. So now when you are speeding something, or you are speeding to the maximum, speed means fire. What is the meaning of speed? The meaning of speed is fire. Speed means growth. Speed means going up. Do you have fire? क्या फायर है आपके अंदर? क्या उसके अंदर तुम्हारे अंदर काम करने की आग नहीं है?
You don't have fire. What is the meaning of that? Okay. Suppose your father is having good money. He started one business for you. That is good. But you can grow the business if you have fire. If you don't have fire, you will destroy the business. Fire means growth. Fire means speeding to the maximum, reaching to the maximum, growing to the maximum. That is fire. हम जितने भी लोग बैठे हैं, कोई बुध डोमिनेंट है, कोई फायर डोमिनेंट है, someone is earth dominant, someone is. If I want to start my business, if I am Buddha, I will do the partnership with a fire person. If I have meted with the person, the higher Buddha personality, they have started 10 business, never completed a single business. 10 बिजनेस स्टार्ट किए, एक भी कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज दे डोंट हैविंग नो फायर. जब जन्म कुंडली मिलाते हो तो दोनों बुढ़ नहीं होना चाहिए. When you are doing matchmaking, one Buddha, another one should be different. Because every element having some positivity as well as negativity. We will be understanding the positivity of the Buddha and the negativity of the Buddha also. So the second element, that is fire. So whenever now fire comes, जब भी fire की बात आएगी, in the TCM we are telling, in the fire we have heart, small intestine. The meaning of HT means heart. The meaning of SI means small intestine. And pericardium and triple warmer. The PC means pericardium and TW means triple warmer. These all coming under the fire. We can see there are two brackets, one bracket with the heart and small intestine, one bracket with the pericardium and triple warmer. So one is the fire, one is the maximum fire. Fire means heart. फायर का मतलब क्या है? फायर मीन्स हार्ट. द पर्सन हैविंग फायर पर्सनैलिटी, हैविंग इंटेंशन टू रीच टू द टॉप. क्योंकि फायर का नेचर ही वही है. क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप ऊपर और सब आपके नीचे, मीन्स यू आर फायर? फॉर एग्जाम्पल, वन सिंगर looking the dream, he's singing the song and lakhs people are clapping. That is fire dream. That's the fire personality. If you are an acupuncturist, you will be seeing I am treating the patient using acupuncture and 100 patients in the queue. And I am telling I don't have time. Sir, please, your fire personality. Fire personality means सब दुनिया मेरे पीछे है ना. दुनिया मेरे पीछे. That is fire. We should have fire. Without fire we can't. Okay, if not fire, do you want to become successful acupuncturist?
ओके, ठीक है, देख लेते हैं, बन जाएंगे तो ठीक, पीजी डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर देखो, ठीक है, सीखेंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो ठीक है, जाने दो। इफ यू डोंट हैव फायर ना, यू आर नॉट हैविंग great desire of name and fame. We should have little bit desire of name and fame also. That is fire. Okay. Fire means maximum growth. Okay. Even if the fire personality is balanced, maybe you are not having the desire, but you will keep growing because of your fire attitude. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सपने देखो, मे बी आप थोड़ा सा बैरागी हो गए हो, माइट बी यू हैव डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ड, बट यू हैव गुड फायर, you will keep growing till the maximum. That is the fire. For that, body should be balanced, heart should be balanced, small intestine should be balanced. If you are eating too much spicy, then small intestine will get disturbed, your fire will get disturbed, then something wrong might happen. So balance your gut, balance your heart, इफ यू वांट टू रीच टू द मैक्सिमम। जैसे आपने देखा कि किसी राजा ने दूसरे पर आक्रमण कर दिया और उसका राज हड़प लिया। व्हाई दैट किंग हैज अटैक्ड टू अनदर किंग? बिकॉज ऑफ फायर एटीट्यूड। आई वांट दिस, एवरीथिंग शुड बिलोंग टू मी, दैट इज फायर एटीट्यूड। ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग? देन आफ्टर दैट, so wood and fire coming under yang. So the yang means wood and fire. Now we have reached the maximum. Now the journey of yin. जब आप मैक्सिमम पर पहुंच जाते हो, then sometime what happen, maybe after you initially you will be putting great efforts, you're working day and night, you're not taking care of health, you just want name, fame, money, good partner, good home, you want these is because of the fire. Okay, after you, after some time you get satisfied or you get डिटैच्ड विद दिस। यार बहुत भाग लिया, बहुत भागम भाग कर ली, अब थोड़ा सा शांति चाहिए। नाउ आई नीड स्टेबिलिटी। सो देन द थर्ड फेज, द नेक्स्ट फेज स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स पुट लिटिल ब्रेक। ओके, नाउ आई डोंट वांट टू रन हियर एंड देयर, just I want to get settled at one place. I want my family, I want my kids, I want prosperity, but I want stability. Okay, that is the next phase, that is called earth element. Earth element means the stability phase. और वो भागम भाग के बाद ही आती है। आपने कहा डायरेक्ट अर्थ आ जाएगी, मजा ही नहीं आएगा। बचपन में यांग ज्यादा होना जरूरी है। जो बच्चा जितना शैतान होगा वो उतना इंटेलिजेंट निकलेगा, और जो बैठा रहेगा ऐसे ही, समझ जाओ, उसका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। द किड्स आर हाईली नॉटी, दे बिकम मोर इंटेलिजेंट। कितने लोग आप में से बहुत नटखट थे बचपन में? जरा हाथ उठाइए तो। वेरी नॉटी, बड़े सीधे साधे थे क्या? हाँ,
देखो, आप नोटी थे कि नहीं थे वो तो आपकी मम्मी ही बता सकती हैं। आप लोग नहीं, जो लोग बोल रहे हैं हम नहीं थे, उनकी मम्मी से पूछना पड़ेगा। वो बताएंगी कि नोटी नाक में दम करके रखी थी भाई इसने तो। इन द चाइल्डहुड इफ यू वर नोटी, दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। जब तक मम्मी ना बोले इसके मारे तो परेशान हूं, मीन्स यू आर वेरी गुड, है ना? सो या रेणु कुमारी जी, यू लुक स्टिल नोटी। Many of you still looks naughty. I don't know. I will not disclose about myself. So stability or the break, that is third phase, that is earth. Earth. Earth means stability. Enough. Now I need break. बहुत हो गया भाई भागम भाग, अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। जैसे कि आप, when you are learning, initially you are putting a great effort. After some years of life you are thinking, okay, now I should make my clinic, I should get settled। आवाज नहीं आ रही है? आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा सेटल हो, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, we are we all are having some special personality, like someone is good personality, he will be remaining good throughout the life. Definitely the changes will happen, but the Buddha personality always be dominant till the death. He will be always be young in the nature. Some personality will be fire. एक व्यक्ति हमेशा फायर पर्सनैलिटी में रहता है। Definitely with the life he will be also moving from wood to the fire and all, लेकिन वो पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी ही रहेगी। वो हमेशा till the end of the life he will be running for the name and fame. So I want to tell you, definitely all of us taking birth, growing, then becoming old and going toward the death, सबके साथ ही होता है। लेकिन फिर भी हम सबकी एक पर्सनैलिटी होती है। एक पर्सन हमेशा सैड ही रहता है, कुछ भी कर लो वो दुखी ही रहता है, वो उसकी पर्सनैलिटी है ना? तो वो पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी खराब नहीं है। लाइक इन द हैंड्स देयर आर 5 fingers, thumb is having different shape, index, middle, every finger is having different shape, every personality having different positive quality. सो वी कांट टेल, हम ऐसा नहीं बोल सकते यार ये इसकी पर्सनैलिटी गलत है। ओके, आई एम मिक्सिंग हिंदी एंड इंग्लिश, डोंट वरी। सो व्हाट आई वाज व्हाट कैन acupuncture not change the personality? Acupuncture is not for changing the personality, acupuncture for balancing the personality. Remember one thing, if I have a good personality I can start the business, but for making my business stable I need support of other personality. We'll discuss that, will come. So we reach till the earth, हम अर्थ तक पहुंचे। अर्थ का मतलब है स्टेबिलिटी, ब्रेक। So we started our journey. Starting of car means Buddha, speeding up, reaching to the maximum, that is fire, then putting the brake, that is earth. Now putting the strong brake so that I can reduce the speed, to reduce the speed.
that is called metal. What is metal? Metal means degeneration. Metal means strong brake. Metal means reducing the speed. It is automatically happening, whether we do something or not. Today, if I am 40 plus, whatever I will do, I cannot look 20. Maybe my heart, my energy might be for 20. हार्ट 20 का हो सकता है, एनर्जी 20 की हो सकती है, लेकिन चेहरा, बाल, बॉडी तो बता ही देगी दैट ही दिस पर्सन इज 40 प्लस, है ना। अब हमारे देखो विजय जी भले उनकी एनर्जी 25 की है, लेकिन देखने से तो लगेगा कि ही इज 45 50 प्लस। एम आई राइट और नॉट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, degeneration means falling of the hair, body moving toward the, so that is the metal phase. Metal means strong degeneration. And finally, stopping the car, stopping the car, ending of cycle, that is called water phase. Water phase. Okay, don't worry, I will make here because it's still not understood. So we can divide yin yang two part. On the one side is the yang, on the other side is the yin. Yang is having, yang means wood and fire, and yin means earth, metal and water. That is a yin. So wood means liver and gallbladder. Fire means heart and small intestine. Pericardium and triple warmer. Earth means spleen and stomach. Metal means lungs and large intestine. And water means kidney and UV. So this is called 5-element cycle. Means element number 1, element number 2, element number 3, element number 4, and element number 5. Whether I take the example of car, so car will go to the maximum speed, then will come back to the 0 speed. Whether you talk about the human will take birth and will complete the cycle and coming back to the death. So this cycle keep moving all the time. That is called 5-element cycle. In the 5-element cycle, these are very important, like liver and gallbladder, heart and small intestine. These all are very important because we can manipulate all the energies and we can balance all the energies. हम सारी energies को balance कर सकते हैं, right? So we will be discussing all the energy in the very detail. Let's start with the energy number 1. What is the name of that energy? Wood energy. Because right now I just told little, and you will understand your personality also with that. So right now I just told little about the wood, little about the fire, little about the earth. But now we will be understanding about each element in the detail. So let's start with which element? वुड एलिमेंट. अब हम कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे? वुड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. So now, the first thing I would like to tell you about the wood, very important thing about the wood.
or about the liver and gallbladder. Bud means birth, we understood. Let me draw here. So the first element, that is Bud, we are drawing the green color because we see the Bud all around looks green. So we are drawing it with the green color because the color of Bud is green. And the liver and gallbladder coming under the Bud. And just we have discussed, अभी अभी हमने समझा, the meaning of Bud means birth. The meaning of Bud means starting. The meaning of Bud is initiation. The meaning of Bud is ignition. Bud का अर्थ है, बुड का मतलब है अभी अभी अंकुर फूटा है, अभी अभी जन्म हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इनिशिएट हुआ है, अभी इग्नाइट हुआ है, ये बुड का मतलब है. As per the TCM, very important thing has been told about the Bud. So liver is the place, liver is the place where Hun is residing. Hun. Hun क्या होता है? Liver is the residence of Hun. Very important thing. So I want to start with the Hun. Hun क्या होता है? In the acupuncture, everything is two, yin and yang. In the same way, we talk about the soul. There are two types of soul, yin soul and yang soul. In the TCM, it has been told when the person is dying, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, yang soul merge in the sky and yin soul merge in the earth. And when the person is taking birth, the yin soul is coming from the earth and yang soul coming from the sky. So now I'm talking about the yang soul who lives in the ether. So other name of that soul is etheric soul. That soul is entering from the DU20 and going in the liver meridian. So liver is the residence of etheric soul. Liver is the place where etheric soul resides. Other name of etheric soul is Hun. इसी का दूसरा नाम क्या है? Hun है. That's why in the TCM vein we put the needle on the DU20. So DU20 is the entry point of liver meridian. Now you will be thinking, but the liver meridian start from the great toe. Yes, you are right. कि लिवर जो मेरिडियन है कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे ग्रेट टो से स्टार्ट होता है. सो लेट्स सी दिस. सो हियर वी कैन सी द लिवर मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम द टो एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ लिवर 1. The liver meridian is traveling throughout the body and ending near the liver. ये लिवर के पास एंड होता है, लिवर 14. तो यहां सिर की बात कहां से आ गई? Where is the head? But
in the TCM, there are two type of pathway. One is the external pathway, that is called meridian pathway. Second is the internal pathway. Now I will show you the internal pathway of the liver meridian. अब मैं आपको दिखाऊंगा, this is the external pathway of the liver meridian. Now look at the internal pathway of the liver meridian. Now we can see this is the internal pathway of the liver meridian, who is crossing the throat cavity, who is crossing the lips, who is crossing the eyes, and reaching on the top of the head till the DU20. ये liver का internal pathway है. We can see here, right on the top of the head. So if the person is having vertex headache, that is because of the liver disharmony. And even we can treat the multiple problems of the throat by the liver. We will be discussing later on, but right now my focus is Hun. Hun is entering from the DU20, then residing in the entire liver channel, not only in the liver organ. Hun पूरे liver channel में निवास करती है, और hun का मतलब है सोल, ईथरिक सोल. सोल दो प्रकार की है, एक है वेरी इनर्जेटिक, वेरी यंग इन द नेचर, that is etheric soul. So liver is having very young nature. Liver का nature बहुत ज्यादा young होता है. The other soul or the yin soul that reside in the lungs, we will discuss separately. Lungs, that is yin soul that reside in the lungs, that is having connection with the, अगर वो बैलेंस है, lungs बैलेंस है, if the other soul is balanced, let me write here. So yang soul and yin soul, there are two type of soul. Yang soul lives in liver and the yin soul lives in lungs. The name of this soul is etheric soul or Hun. The name of this soul is corporeal soul. The etheric soul, ether, it is very young in the nature. On the other side, if we talk about the corporeal soul, having connection with the sorrow and happiness. That's why if the person is having disharmony of the lung, we can see person will be sad or lack of happiness. On the other side, लिवर की बात करें तो लिवर में हमारी कौन सी सोल होती है, दैट इज ईथरिक सोल. So if your liver is balanced, you are having good boundary, because etheric soul making you energetic. etheric soul आपके चारों तरफ एक बाउंड्री का निर्माण करती है. No one can enter in your boundary. That boundary is created by etheric soul. कि ये मेरी बाउंड्री है, डोंट क्रॉस दिस. कहते हैं कि अपनी सीमा में रहो, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो. ये कौन बोल रहा है लिमिट को क्रॉस मत करो? अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, मेरी लिमिट में मत एंटर करो. दैट इज ईथरिक सोल that is created by the liver. If your liver is weak, anyone can enter in your boundary.
कोई भी आपकी बाउंड्री में एंटर करेगा। यू कैन नॉट प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर्स if your liver is weak, if your etheric soul is weak, your hun is weak, anyone can step in your boundary. If you are having good liver, then if anyone try, then he will understand, okay, now I should not cross this. But on the other side, if your liver is overactive, अगर आपका लिवर ओवर एक्टिव हुआ, then what will do? You will enter in other bound. You will step in the other boundaries. Are you getting my point? For example, if I am having hyperactive liver, I will try to enter in others boundary because of my vision. Okay, I have to create my kingdom. Let's attack. Whether you want or not, you have to attack. You are my soldiers. तो मेरे सिपाही हो, तुम्हें आक्रमण करना पड़ेगा. So that is all about the liver. So liver is very much responsible. अगर आपको लगता है कोई आपको बहुत परेशान करता है, आपकी बाउंड्री में एंटर करता है, अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग करो भाई. Strengthen your liver. If someone is entering in your boundaries and you are thinking that some other person is stepping, उसका लिवर काम डाउन कर दो, उसका लिवर शांत कर दो. So liver means that whole or the etheric soul should be balanced. Suppose there is a husband and wife, and husband is having hyperactive liver, or wife is having hyperactive liver, then this will try to enter in the, ये दूसरे को सप्रेस कर देगा, उसकी बाउंड्री में एंटर कर, क्योंकि हर किसी की अपनी बाउंड्री है. वाइफ की अपनी बाउंड्री, हस्बैंड की अपनी बाउंड्री है. एवरीवन मे बी दे आर पार्टनर बट दे हैव own boundaries. You will see if the one person is having hyperactive liver, other person will be sad and depressed. You can see if there are two partners. If the etherics, if the person is having hyperactive hun, if the person is having hyperactive liver, we should calm down the liver. Otherwise, the partner will be having, उसका विजन ही खत्म हो गया, खत्म. Means because liver is giving you vision. So in that way, liver is very much important. With a few points only, we can balance the liver. थोड़ा सा introduction था. So tomorrow we'll be jumping to the full discussion of the liver. कल हम पूरा लिवर का डिस्कशन करेंगे. एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सभी को? ज्यादा फिलोसॉफी क्लास होगी ना? नहीं, चलो ठीक है. ओके, यस मंजूश्री. थैंक यू सर. वेलकम. सर ये क्वेश्चन मुझे, जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और पार्किंसन. Okay. So actually, yeah. So Parkinson we will discuss. In this class, it's difficult because I was thinking to discuss some protocol, but no one will understand. So let me think how to discuss, right? Okay, sir. Yeah. Yeah, sure. Thank you, sir. Welcome. हाँ जी. यस, हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, इस्माइली जी. हाँ सर, जय हिंद सर. हाँ,
एक सर, मैंने तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लिंक थोड़ा लेट से मिला था, बट बहुत अच्छा लगे सर। थोड़ा लीवर के बारे में सर, कल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बट थोड़ा जैसे कोलेस्ट्रॉल, आजकल बहुत व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, एसजीओटी एसजीपीटी हो गया। इसके बारे में कुछ सर प्रोटोकॉल बता सकते हैं क्या? क्योंकि हर Yeah, चार। we'll discuss. Yeah, अभी प्रोटोकॉल जल्दी हो जाएगा, we will discuss step by step. हाँ सर, नमस्ते। We will discuss. Now you are having more sessions, so we'll discuss, right? Tomorrow हाँ we will नमस्ते। fully discuss about the liver and we'll cover lots of part of the liver, right? Don't worry for that. नमस्ते नमस्ते सर। Yeah. Yes, namaste. सर ये सर जो आप पढ़ाते हैं इतना डीपली में, ये किताब उताब सर कोई मिल सकती है? क्योंकि हम लोग सर जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं 1-2 सेमेस्टर इलाहाबाद से, तो उसमें इतना डीपली रहता नहीं बुक में। किताब तो किताबें तो वही सारी हैं, उन्हीं में से हमने भी पढ़ा है ना। नहीं सर, आपके जो लेक्चर में बड़ा डीप रहता है नॉलेज उसमें। वो क्या होता है, वो अपने आप आता है, किसी किताब में से नहीं आता, अच्छा अच्छा। वो अपने आप ही आता है ना। वो क्या होता है, कुछ कभी कहीं से पढ़ा, कभी कहीं से पढ़ा, कभी कहीं से पढ़ा, तो वो सब आ जाता है, तो वो अपने आप आता है। ऐसा किताबों में तो नहीं दिया एग्जैक्टली हाँ वही, है, नहीं दिया। जैसे सर जो किताबें मिली हैं वहाँ से, हाँ हम लोग 1 सेमेस्टर वहाँ से पढ़े थे, यही चीज जो आप बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन इतना डीप में न उसमें लिखा है, न जैसे हम लोग जैसे ऑनलाइन ही पढ़े थे, तो हम्म। कोरोना काल आ गया था। हम्म। तो लेकिन इतना डीप में मतलब हम लोग नहीं जा पाए थे। एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं भी एक स्टूडेंट मैं खुद भी होता हूँ, अच्छा। है ना। मैं भी गुड सीखता हूँ। नहीं। इवनिंग सर। हाँ तो मुझे सर भी, आप अब जो कुछ चीजें मैंने बताई हैं आपको, मेरा कुछ प्लान ही नहीं था कि मैं आज उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो आती है चीज तो आ जाती है, वो अपने आप आती है, कहाँ से आती है वी डोंट दैट, है ना। तो पेड क्लास सर, ये अनपेड आज लास्ट है सर? नहीं, अभी 2 दिन और मिलेगा आपको। ओके सर, ओके। जी जी। हाँ, स्माइली जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। Sir, this is regarding, we were talking about DU20 point. You said energy to liver. In the sense, we get energy from here, sir. Or the other thing you said that starts from the great toe. Yeah, so actually in general, What we is the all difference know. between this energy and meridian, sir? Okay, I'm telling you. Everyone knows that liver meridian start from the great toe, right? Okay, okay, And ending on the chest. That we know. okay, Maybe everyone knows or not, but I'm going to discuss now. okay, sir. But every meridian is having internal pathway. Like I have given, I shown in the image. Every meridian having internal pathway, right? So when we talk about the internal pathway of the liver meridian, it's going through the throat cavity, it's going to the lips, it's going through the eyes, and it's reaching to the DU20. That's why if the Internal person is pathway. internal path, internal. That is apart from meridian, you have one more Yeah, internal pathway. that is internal. Internal means meridian also having internal pathway. अंदर का रास्ता भी होता है इनका, हर मेरिडियन का अपना अंदर का रास्ता होता है, वो Even that रास्ता भी starts फिक्स from है। toe only, sir. या Even that starts from the toe only. Internal meridian also starts from toe. नो, फ्रॉम द टो नॉर्मल मेरिडियन starts ending Okay. on the chest, but Okay. its internal pathway still continue. That's why if the person is having problem with eyes, why we treat liver? If the person is having lips problem, why we think for liver? If the person is having headache, why we think for liver? There should be some connection now. We know, okay, liver is connected with the eyes, liver is connected with the eye, but how liver is connected with the eyes? Because internally there is some pathway connected. Getting my point? Even I will tell you, Yes, like sir. I have shown this, internally it is, so from the DU20, the etheric soul, the entry point of the etheric soul, DU20. तो जब हम DU20 को स्टिमुलेट करते हैं, when we are stimulating DU20, we are also working on liver. और लिवर में हम कैसे काम करते हैं, we will discuss. Liver is means great energy. We want to lift the energy, stimulate the liver.
it will lift the great amount of the energies in the each and every Sir, part. energy means you are telling about cosmic energy, sir? Meridian energy. Energy means कहते हैं chi. Okay. Okay. We're talking about the chi. Okay, you got confused with the energy. Energy means chi. Okay. Oh, okay. Thank you, sir. Done? Yes, sir. पॉइंट इसके साथ जोड़ना मेरे को सेंसिबल नहीं है, तो मुझे सेंसिबल लगाओ, वो इकलौता नहीं सेंसिबल डालेगा। ठीक है यार, तुझे जो लगता है तू सोच सकता है, मुझे लगता है मैं सोच सकता हूँ। तुम लड़के में शायद डिस्कस करते हो तो सुनते ही नहीं हो, क्या मतलब को सुनते ही नहीं। आर्गुमेंट हो रहा है। मुझे लगा कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, divergent are different. Divergent channels are different. Okay, because there are many paths. You know, अगर हम मेरिडियन के जो पाथ हैं उसके अलावा बहुत सारे पाथ हैं। लियो पाथ, द पाथ ऑफ द लियो वेसल्स, द पाथ ऑफ द डाइवर्जेंट चैनल, इंटरनल पाथवे, ऐसे बहुत सारे पाथ हैं, है ना। हम केवल मेरिडियन पढ़ के सोचते हैं अरे हमको तो टीसीएम आ गया। अरे बहुत सारे अंदर इंटरनल पाथवेज हैं, ऐसे 73 पाथवे हैं अलग अलग प्रकार के। हम जो 14 मेरिडियन पढ़ते हैं ना, वी आर डिस्कसिंग 14 मेरिडियन, but total if we see in this way there are 73 different paths which we are not going to discuss, but whatever will come in the flow we will discuss all the things, right? Yes, Jyotika ji, yes please. Sorry, unmute. Sir, even gallbladder, in the sense liver and gallbladder is there in wood. So for both of them, it is starting from here only, sir, or wood? No, only Or liver. only for liver? I will discuss that thing. The DU20 is the meeting point of all the yang plus liver channel. This is the meeting point of all the yang. This is the meeting station for all the yang. All the yang means how many yang channels we have in the body? 6 yang channels. 6 yang So channels, this yes. is the meeting point of all the yang channel plus liver channel. Okay. Yeah, internal pathway there is a no marked acupoint. Internal pathway में acupuncture point नहीं है ना? Internal pathway is there, but there is a no acupoint on the internal pathway. Yes, That Jyotika is ji. what, sir, in Rana EFT to tapping, आपने when we do exercise, EFT tapping, we do tapping here also. So that Yes, is yes. to get the energy. Yeah. Yes, right. Yes. सर आपने हाफ तो आंसर कर दिया। मेरे को ऐसी क्वेश्चन आया है कि क्या ऐसा भी कोई पॉइंट है जहाँ सारी मेरिडियंस चाहे इंटरनल एक्सटर्नल मिलती हो, ऐसा भी होता है कोई पॉइंट? ऐसे कई मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, लाइक मीटिंग पॉइंट ऑफ द ऑल द यिन, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द यांग, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी का यांग बढ़ा हुआ है, if the person is having high yang, this is the one point, meeting point of all the yang. थोड़ा coconut, put the coconut oil here and it will cool down the yang, then person will go in the deeper sleep. Suppose someone is not having good sleep, take coconut oil, mix little castor oil. Castor oil should be 1/3. Okay, just you put this combination here on the DU20. Someone is suffering with the jaundice or the liver problem, take Ayurveda herb, which is good for liver. Take Ayurveda herb, like you can take Bhumi Amlaki or any Ayurveda herb. Make the paste and put on the DU20 and you will see improvement in the liver. Whatever I am telling, I have seen the people are practicing in the villages. Okay, so one point to calm down all the yang, because if his yang is very high, it's difficult to sleep. Person is telling you do something, I want to sleep, or maybe hyperactivity, maybe high blood pressure, you want to calm down. Calm down the yang from here. In the Ayurveda, we are taking Amlaki powder, Amlaki. Okay. And mixing with some oil like Brahmi oil, because Brahmi is good for brain. And combination we are putting here.
That but is called sometimes for that is called oil, if we pichu. apply here, we get cold, no sir? The body becomes too cold and we get तो हमें cough and यही we तो देखो, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि कब कौन सा ट्रीटमेंट करना है, वही तो हमें प्लान करना है ना। I will show you that. डायग्नोसिस। चलिए, अभी आपने पूछा है तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, बाद में दिखाऊंगा। एक पिचू दिखाऊंगा, पिचू, नॉट नाउ, वो अलग है। पिचू यानी हम आयुर्वेदा में करते हैं, पंचकर्मा वी डू दिस इन द पंचकर्मा, we are telling this as a marma point and we are doing pichu on this point. We take amlaki powder, putting brahmi oil, applying here for disorder, many disorders. अब वो कौन सी बीमारी है वो तो तब समझ में आएगा जब आप समझोगे कि अभी आप वो लिवर 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 की मैं बात करूंगा, आपको केवल फैटी लिवर याद आएगा या लिवर आएगा? लिवर इज हैविंग कनेक्शन विद मेनी डिसीज, psoriasis, eczema, mental problem, hyperactive child, Parkinson. There are too many problems connected with the liver. So let's discuss first about the liver. Then you will understand what all things you can treat just by single point. That is DU20. If we do the moxibustion on the DU20, if you do the moxibustion on the DU20, you can lift the great amount of energy because the meeting point of all the yang. एक सिंगल पॉइंट है जहां सारे यांग चैनल मिल रहे हैं, आपने इसको मोक्सा कर दिया, यांग को बढ़ा दिया। यांग मींस गोइंग अपवर्ड, दिस रिमेंबर गोइंग अपवर्ड। नाउ टेल मी, अगर किसी को यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, वी हैव टू टेक इट अपवर्ड। हाउ टू टेक अपवर्ड? डू द moxibustion here, increase yang. In this way we have to put little logic only and we can do work on the prolapse because the meaning of yang is moving upward. हो गया सभी का प्रश्न? Sir, one more thing, sir. Yeah. Last week we were discussing about that all yang points we have to put seed and give treatment, no, sir? So that is alternate days, everything was fine only, sir. Now from yesterday, I've got swelling once again. Swelling was reduced and pain also reduced after putting all yang this thing. Now it is almost, today is the fourth session. In the sense, alternate days I'm doing. But today I didn't do because I've got swelling. I thought I should ask you and then do it. So if you remember, I told you the horary point acupuncture is very good acupuncture. That is RMP protocol. RMP protocol. RMP protocol means we are giving medicine, but we don't know how it will work, what it will work. अब एक ही प्रोटोकॉल से सब कुछ होगा तो फिर बाकी पॉइंट फिर हम क्यों पढ़ेंगे? थोड़ा बाकी का भी तो छोड़ दो, आपको एक ही से सब कुछ ठीक कर लेना है, बाकी भी तो बहुत सारा। Should I continue it or should I stop it, sir? If you are getting relief, definitely you can continue. Yes, it's very good. You can continue if you are getting relief. Okay. Yeah. Okay. Thank you, sir. Hemant Kumar ji, do you have any question? हाँ सर, ये जैसे इसका सर नोट भी मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलेगा। अच्छा अच्छा Sir, one more question, sir. हाँ बोलिए। This yin and yang, it is heat. Yang means it is heat. Yang, yin means it is cold. This is even body. As per the Ayurveda also, it is same thing, sir. Yeah, but in the Ayurveda we are not using yin and yang. In the Ayurveda we are using some other terminology, right? Like No, in the but we use it Ayurveda we are not cold. telling wood, fire, earth, metal and water. आयुर्वेदा में हम बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है उसका, बट ऑन द रूट एवरीथिंग इज सेम, but concept is little different. Why you are comparing with Ayurveda? Let's go with the acupuncture. No. What I'm telling, no, sir, if particularly some fruits if we eat, no, sir, some fruits it becomes too heat to the body. Means yang is increased. No, for so that thing, definitely the heat in the body means yang, but we have to discuss little more, then we'll understand. But if heat is more, that is yang, right? That is true. But there are two type of heat. The two type of heat I will discuss, but this is not the right time to discuss, है ना? जैसे उदाहरण के लिए कि वो
वो हम बाद में समझेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। विल वर्क स्टेप बाय स्टेप, राइट? बिकॉज देयर आर यंग, excessive, yang deficiency, yin excessive, yin deficiency. There are 4 conditions. So we have to understand all the 4 conditions. Okay, then we'll understand. Yes. सर सर पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है जी? जैसे Personal, कोई, हाँ जी, पर्सनैलिटी आपने बताया ना, जैसे कई आदमी की अर्थ टाइप पर्सनैलिटी होती है या वुड समझ गया टाइप आप, पर्सनैलिटी समझ होती गया, है। समझ। I will tell you 2 things. One is the prakriti, second is the vikriti. One is the prakriti. Prakriti means original constitution, which never be can changed. Which is, like, for example, in the TCM, it's very beautifully explained. I will tell you example. There are 2 person. मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है आकाश। रमेश always walk very fast. Ramesh always move very fast. In the college also, he always walking fast. So for the Ramesh, what is the right personality? Walking fast is the right personality. Now the person number 2, Akash. Akash always moves slow. हमेशा धीरे चलता था वो, उसकी personality वो थी. In the TCM we are telling the person who move very fast, that is the fire personality, and the person who moves slow, that is metal personality. Okay, there are 2 different person having different personality. Now you are meeting them after 10 years. अब आप 10 साल के बाद उन दोनों से मिले. अगर दोनों स्लो चल रहे हैं तो कौन बीमार है? दोनों स्लो चल रहे हैं तो कौन बीमार है? जो स्लो पहले भी चलता था, अभी भी चलता है, वो बैलेंस है। लेकिन जो पहले फास्ट चलता था वो स्लो चलने लगे, और जो पहले स्लो चलता था वो फास्ट चलने लगे, उसे कहते हैं बीमारी, उसे कहते हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, वी शुड ऑलवेज बी इन अवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इफ यू आर हैविंग फायर पर्सनैलिटी, यू आर हैविंग मेटल पर्सनैलिटी, यू आर हैविंग वुड पर्सनैलिटी, यू आर हैविंग अर्थ पर्सनैलिटी, suddenly you see some changes happening. Okay, some changes happening. It means there is some disease, entry of the disease. कोई बीमारी अंदर घुस गई है। तो what I want to tell you, एक तो होती है प्रकृति और द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और दूसरा है विकृति। विकृति का मतलब है कि आप मेटल पर्सनैलिटी के हैं, लेकिन सडनली अब बढ़ गई, 10 साल, ठीक है 15 सर। साल नौकरी करते करते आपकी फायर बढ़ गई। ओके, so what will happen? You will speak a lot, you will speak unnecessary, you will walk very fast. वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो वो जो फालतू का चेंज हुआ उसे विकृति ओके कहते सर। हैं, उसे क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं। उसे बैलेंस करना पड़ेगा, वी हैव टू बैलेंस इट। तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके सर। एक पेशेंट आके मुझे बोलता है, वन पेशेंट टोल्ड मी, एक 70 साल के पेशेंट आके मुझे बोले, डॉक्टर साहब मेरी लाइफ में खुशी ही खुशी है, आई डोंट हैव एनी सॉरो इन माय लाइफ, आई डोंट हैव एनी अनहैप्पीनेस इन माय लाइफ। इतना बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे वो मेरे क्लिनिक में। द पेशेंट वाज कीप स्पीकिंग, इवन नॉट अलाउइंग मी टू स्पीक। फिर बात करते करते पता चला, डॉक्टर साहब आई हैव ओनली वन सन, and but he never visited me, even he lives in my city, but I am very happy. और बात करते करते रोने लग गए, रोना चालू। What do you think? He is really happy. So what I want to tell you, वो व्यक्ति, when the person speak a lot, that is fire. When the person speak a lot, that is a fire. Okay, but his nature is not the fire. His nature is metal, but he started speaking unnecessarily. और वो सच है, वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट ही इज वेरी डीपली सैड, अनहैप्पी, ही इज मेटल पर्सनैलिटी। तो अभी हमें उसका
वो जो फायर बढ़ गया ना, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो उसको हार्ट डिसीज हो जाएंगी। और ये व्यक्ति की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका ऑलरेडी बाईपास हो गया। तो बड़ा ही वांट टू टेल यू, अभी ये मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, अभी मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले एक एक करके हम जब डिस्कस करेंगे ना, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, तब ये सारे एग्जांपल वी विल डिस्कस। ओके, या फर्स्ट स्टेप। नमस्कार सर। या सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये इसको GV20 को हम मोक्षा कर सकते हैं? हाँ करते हैं ना, टू लिफ्ट द ची अप, अच्छा सर। ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए करते हैं मोक्सा। जैसे कोई प्रोलेप्स हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, यूट्राइन प्रोलेप्स हो गया, कोई नीचे नीचे लटक गई, सर इसे मोक्सा करते हैं, लेकिन बीपी में नहीं करते, बस ब्लड प्रेशर वालों को ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, आप लोग बहुत एडवांस बातें कर रहे हैं, अभी थोड़ा बेसिक पे चलिए थोड़ा सा। चलो ठीक है, मैनी प्रैक्टिशनर्स दे आर आस्किंग, ओके डन फॉर टुडे, नाउ विल सी टुमारो, कल मिलेंगे। कोई प्रश्न है तो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, तो वी विल डिस्कस दैट थिंग। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।